Supreme Court as well as an act came, and they said the act. I still don't know. You're going again around. Simple proposition is no. Sorry, you have to answer these questions. So all power vests in the Chief Justice, not in the full court, because full court is then dependent on whether the Chief Justice wants to call a full court meeting or not. The last full court meeting before the one that was called on 18th of September was about 4 years before. Prior to that, a lot of issues had accumulated which have still not been addressed through the full court meeting. So why are you hesitant in calling a spade a spade? Sir, I'll answer that question now. My Lord, the proposition which has been put forward, and this is one of my objections on the Ghulam Muhyiddin case. फिर आप केस पे चले गए जी सर, आप जवाब तो दे मैं दे रहा हूँ कभी आप इधर चले जाते हैं That is the first नहीं हम नहीं आप आपको मैंने एग्जांपल दे दी जवाब दे रहा हूँ प्रिंसिपल स्टेट कर दूं। अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ अब चलें हम इस कानून को उड़ा देते हैं ठीक है इस कानून को हमने उड़ा दिया ऐसी मफरूजा दे रहा हूँ ये कानून उड़ गया ठीक है अभी कोई रूल बनाना मैं नहीं फुल कोर्ट मीटिंग करता हूँ आप करेंगे क्या मुझे जरा बता दीजिए नहीं ये देखिए फैसल साहब you are a highly acclaimed constitutional lawyer so praising me or anyone else should not be a substitute for responding to a query. Not with the particular Professor Siddiqui, as far as the interpretation of judgments, what have been decided, you can give a lecture in a law school. Okay? Here the full court of Pakistan is sitting. We don't want to be given a lecture on precedents. We want to be enlightened by the understanding of the Constitution, which we keep saying is an organic thing, pulsating, evolving, catering to all sorts of situations. I mean, if you're just going to be stuck with the case law, then we should just take a lecture in some law school. My answer is there is no constitutional input then coming. My answer is that there is nothing in the Constitution. The context of that, what you're citing from that judgment is legislative intervention. But the problem is not whether the Chief Justice is the master of the roster. That is not the context of what we are considering now. The context is, and let me therefore ask you the question which I have asked Mr. Salahuddin and Mr. Zaid Ibrahim. I thought if we talk about which question comes first, now another question has been put on another question. Can you answer mine and we get on with it and another question can be asked. So please don't mix up my question with other questions. You respond to my question. Let another question be asked after you've given an answer, or you can keep your answer safe till you finish your submissions. My Lord, I don't want my question to be added on to when I have a clear-cut question. Hopefully you've understood it. If you haven't, I've explained it further. Yes, I've understood. If I may answer. What is this law? Mr. Siddiqui, sorry. Is this your answer? नहीं आंसर हुआ है बात तो कर लीजिए फैसल सिद्दीकी साहब मैंने सबसे कम सवाल पूछे सिद्दीकी साहब मैंने आज सबसे कम सवाल पूछे कम से कम यही राइट मास्टर ऑफ द रोस्टर को दे दीजिए प्लीज इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो बात का वो ये आप बात तो कंप्लीट कर लें प्लीज because it is that committee is the creation not of the full court but मैंने आपसे 2-3 बातें और भी पूछी थी अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट ना कॉल करे अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो फिर पार्लियामेंट ने कर लिया एक काम ठीक है मुझे करना चाहिए था नहीं किया मैंने तो किसी दूसरे ने कर दिया तो अब वो कॉम्पिटेंस है तो अगर मेरे ही में कॉम्पिटेंस है चलिए वो बात भी मान लेते हैं नहीं है तो फिर इसका मतलब एक लॉक जैम हो गया क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा मैंने तो करना नहीं है किसी सूरत में और मैं किसी और को भी नहीं करने दूंगा तो बुनियादी बात तो यहीं आके ठहरती है ना अब सादी बातों को सादे अल्फाज में बयान करते हैं ना इतने जजमेंट्स ये पहले इशू आया नहीं था सुप्रीम कोर्ट के पास तो नया इशू है तो आप ज़्यादा आइन को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तशरीह कीजिए ना अगर हम आइन की तशरीह सिर्फ जजमेंट से करने बैठें तो फिर हम एक टेक्स्ट बुक उठा लेंगे पढ़ लेंगे उसमें वकीलों की ज़रूरत नहीं है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी आप कहिएगा फलां आप पढ़ लीजिए बुक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको सारे जवाब मिल जाएंगे नहीं वहाँ जवाब नहीं मिलेंगे क्योंकि अब जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो पहले नहीं देखी गई थी
और हो सकता है पहले गलत देखी गई हो, ये भी मुमकिन है। तो अपना विजन खुला रखना चाहिए, बेशक वो मेरे खिलाफ बात हो या मेरे फेवर में हो। इधर तो मैं अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको इसमें कोई रुकावट होना चाहिए कि आप चीफ जस्टिस के सामने खड़े हों और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आप मेरे इख्तियारात में कमी ला रहे हो, तो आप हिचकिचाहट क्यों, आपकी तरफ से क्यों मैं ये कोई हिचकिचाहट हिचकिचाहट है? नहीं, मैंने तो